See the first question. Here two long parallel wires carry constant current I along same direction. The wires are separated by a distance 2L. The magnitude of resultant magnetic induction in a symmetric plane of the system located between the wires at a distance r from each of the wires. Normally अगर दो parallel wires हैं हमारे पास scanning current in the same direction. If you have a symmetric plane which lies between these two wires, अब इन दोनों वायर्स के बीच में अगर हम देखें लाइक से इसके अगर हम राइट साइड पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स इसका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स आएगा एंड इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्स आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर लॉन्ग स्ट्रेट वायर इज सेम म्यू नॉट आई बाय 2 pi r so we say that for long straight wire दोनों वायर्स का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा सेम म्यू नॉट आई बाय 2 pi r and because their directions are opposite, net magnetic field will always be zero. That's direction of is opposite. Net field will always be zero. Next is current I is 1 ampere is flowing through a straight conductor of length 16 centimeter. So I have a straight conductor whose length is given as 16. Current flowing through it is 1 ampere. You have to find magnetic induction at a point 10 centimeter from either end of the wire. So that means दोनों end से अगर distance same है, so that point is lying on the perpendicular bisector. तो ये given है. आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द वायर्स ये डिस्टेंस टोटल वायर 8 10 16 so this is 8 for long straight wire magnetic field is इस केस में perpendicular distance कितना हो जाएगा 8 A will be equals to 6 centimeter and 5 by 2 yeah sin phi 1 sin phi 2 sin phi 1 is perpendicular over hypotenuse so sin phi 1 and sin phi 2 both will be equals to 8 by 10 or 4 by 5 because this is perpendicular to hypotenuse A की value 6 so you substitute the formula mu naught by 4 pi is 10 raised to power minus 7 current is 1 ampere A is given as 6 centimeter so इसको सॉल्व कर सकते हो क्या वैल्यू आएगी
solving you will get 8 by 3 into 10 to the power minus 6. 8 by 3 into 10 raised to the minus 6 Tesla. Clear again? Next is a circular ring of radius r carries a current I. Value of B along its axis at a distance r from the center. We have a circular ring. हमने at a distance x का formula draw किया था. Magnetic field on the axis of ring is. Now in this question we are given that radius is r and distance where magnetic field is calculated, that is also r. Means A is equals to x is equals to r. So B comes out to be 2r square raised to power 3 by 2. कौन सी ऑप्शन बनेगी? फिर 4 root 2r. You not I 4 root 2r. Okay, what does this will be? You not I r square. Two root 2r. So you not I by 4 root 2r. The magnetic field at the center of circular loop in the circuit shown in figure. हमें दिया है कि दो है, एक सर्कुलर लूप और एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है. दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में ऑपोजिट में एट द सेंटर. वे वायर का मैग्नेटिक फील्ड निकाले एट द सेंटर. Thumb in the direction of current, fingers towards B. The magnetic field will be outwards. And circle का मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगा? सर्कल में करंट ऐसे फ्लो कर रही है. So it will be inwards. इसका मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, सर्कल का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स. सर्कल के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? Because net magnetic field is net magnetic field is magnetic of circular coil plus magnetic field of straight wire. Straight wire का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर म्यू नॉट आई by 2 pi a and its direction is outwards. Circular wire and its direction is inwards. Larger value कौन सी है? Magnetic field किसका larger है? Circle और straight line. Numerator same है. Denominator is larger in denominator is larger than straight wire. तो net magnetic field पे कितना लिखते हैं? So the net field is Q naught I by 2a minus in direction of net magnetic field will be this larger minus smaller, so inwards. Larger minus smaller and direction same as larger. So it will be mu naught I by second part आ जाएगा आंसर.
In a given figure, magnetic induction at point O. Y का ऐसे दिए ए बी का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O, बस यहाँ से करंट आ रही है, ऐसे फ्लो कर रही है. Magnetic field of AB at point O. Zero, because it's along the line. Magnetic field of BCD, semicircular wire का magnetic field. म्यू नॉट सेमी सर्कल है तो म्यू नॉट आई बाय 4r, और डायरेक्शन कौन सी आ रही है इसकी? आउटवर्ड्स. सो म्यू नॉट आई बाय 4r एंड डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स. PE का मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O. इसका मैग्नेटिक एट पॉइंट O, डायरेक्शन कौन सी? इनवर्ड्स आउटवर्ड्स. In magnitude, semi-infinite wire. So magnetic field of PE would be mu naught I by 4 pi A, and direction is again outwards. So दोनों को add up कर दो. Mu naught I by 4r plus mu naught I by 4 pi r, and direction is outwards. Clear है? Two concentric conductors of radius r and 2r lie in a plane. They carry equal current in same direction. If magnetic field to inner conductor is 1 Tesla, the resultant magnetic field to two conductors at the centers. हमें दिया दो concentric circular conductors of radius r and 2r. And they carry equal current in same direction. The magnetic field to inner conductor is 1 Tesla. दोनों के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है या ऑपोजिट है? सेम. तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड ऐड अप करना है ऑपोजिट. हमें इनर कंडक्टर के लिए दिया है इक्वेशन. This is 1 Tesla. For outer conductor, its radius is doubled, current is same. So radius double हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड हाफ हो जाएगा. So total magnetic field would be B1 plus B. सेम क्वेश्चन है सर जेईई मेंस में आते से उन्होंने एक बार रेडियस आर और एक बार 3r दे दिया था. बिकॉज अगर 3r ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? r and 3r, this becomes 1 Tesla, तो this will be 1 by 3 Tesla. Otherwise same in numerical था. क्लियर है? Two points P and Q on the axis at a distance r and 3r from center of circular coil of radius r and carry current. The ratio of magnetic induction with P and Q. हमें 2 points दिए हैं. Say circular coil of radius r. Two points at a distance r and 3r from the center. You have to find the ratio of magnetic field at 2 points. चलो सॉल्व इसको क्या आता है? Use this formula.
A is equals to R and X is equals to, in one case it's R and in one case it's 3R. Find the ratio if we were DQ. So the factors remaining same. We can say VP by VQ is the value देखो क्या होगा. XQ is 3R and XP is R. A is R. 5.5 is to 1. Clear is equal. This numerator same था so VP by VQ की वैल्यू निकाल दी. The long wire carries current of 20 ampere along the axis of solenoid. The field due to solenoid is 4 millitesla. The resultant field at a distance of 3 millimeter from the axis of solenoid is. Question समझ में आया क्या? हमारे पास solenoid भी है. So you can assume यहाँ से current outwards. ऐसे करंट फ्लो करेगी इधर से आउटवर्ड्स इधर से तो solenoid. हमें एक चीज और दी है that it carries a long wire of 20 amperes along the axis of solenoid. एक और वायर है जिसमें 20 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है along the axis of solenoid. You have to find magnetic field intensity at a point 3 millimeter from the axis of solenoid. इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहे कैसे कर सकते हैं. सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है और किस डायरेक्शन में होता है. इफ यू टेक लॉन्ग सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड इनफाइनाइटली लॉन्ग का क्या फॉर्मूला आया था. You know NI. And its direction is along the axis. हमें इसकी वैल्यू ऑलरेडी दी है. आपको सॉल्व कुछ नहीं करना. दिस वैल्यू इज गिवन एज 4 मिलीटेस्ला along the axis. मतलब इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा सोलेनॉइड में वो इस डायरेक्शन में. स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स. मतलब वायर का और सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है. वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा. इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर तो म्यू नॉट आई बाय 2r. So 2 by r. 2 into 10 raised to power minus 7. I is given as 20 ampere. It R is 3 millimeter.
40 by 3 into 10 raised to the minus 4s. Resultant field कितना हो जाएगा? Because magnetic field of wire and solenoid, they are mutually perpendicular. So resultant field will be vector sum. So resultant field कितना आ जाएगा? The root of BS square plus BW square means 16 4 square plus 4 by 3 plus square 16 by 9. 16 plus 16 by 9. 4.2 millitescal. कुछ समझ में आ रहा है कैसे किया? Current I flow is flowing in a conductor shaped as shown in figure. Resultant magnetic field. Again वायर को हम स्प्लिट कर देंगे. सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है. सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? For AB, magnetic field at center is 0. For BC, 3/4 of circle. So 3/4 of circle means magnetic field of AB to 0 है. For BC, it's 3/4 of circle. And for semi-infinite wire, so direction. BC के कारण it's outwards. और इसके कारण भी outwards. दोनों को ऐड करना. That will give you the answer. दोनों का magnetic field simply add कर दो. So ये part आ जाएगा आंसर outwards. Next, a wire of length L is bent in an arc of circle and find to subtend an angle theta at the center. Wire of length L is bent into an arc of circle. Normal हम लेते हैं कि if you have a wire, if it subtends an angle theta at the center, magnetic field is ये फॉर्मूला. तो इसमें आंसर रेडियस की टर्म में नहीं बताना, लेंथ की टर्म में बताना है. Here given that this length is L. इस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा? Because you can use that theta is equals to L by R. R is equals to L by theta. ये the substitute. Leonard Iber 4 by. Clear है कैसे किया? Same in terms of R, you have to use in terms of L. Because length of arc दिया है. Clear है? Magnetic induction at point O. हमें पूरा एंगल सही दिया.
तो मैग्नेटिक फील्ड इसको भी ऐसे ही मार्क कर दो। से एक ले लो से AB। D2A का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा और D2C का कितना होगा? दोनों की डायरेक्शन सेम या ऑपोजिट? दोनों लूप्स में जो करंट शो किया दैट इज सेम डायरेक्शन। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। अगर मैं आपसे पूछूं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ PA होगा कितना? अगर ये एंगल फाई है तो दिस एंगल विल बी 360 minus 5, 25 minus 5. So magnetic field of AB will be Q naught I upon 2A. ठीक है, because theta by 2 pi. And magnetic field of DC will be phi by 2 pi. इन दोनों की डायरेक्शन सेम। क्लियर है ये? The magnetic induction at point O if the wire is carrying current I. तो इसको solve. Magnetic induction बताना है इस point पे। Dead center. Current ऐसे flow कर रही है। Find magnetic induction at point O. तो कितना आएगा? Magnetic induction at point O. क्या वैल्यू आई? At point O. तीन वायर्स है, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O into 3 wires. पहले तो तीनों वायर्स का देखो, मतलब डायग्राम स्विच में आ रहे हैं, गिवन दैट यहाँ ऐसे जो 3D फिगर है, यहाँ से करंट आ रही है, then it flows in semicircle and then it goes out from this side. तो अगर मैं AB और CD का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा या ऑपोजिट? AB is current going inwards. Current going inwards, magnetic field is इस डायरेक्शन में AB का। CD में current is moving outwards. तो मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट ये भी सेम। AB और CD का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम डायरेक्शन में है। DC का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स। DC का मैग्नेटिक फील्ड इनवर्स है, तो रिजल्टेंट फील्ड कितना हो जाएगा? दो सेमी इनफाइनाइट वायर्स है,
AB and CD इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम है एंड जो BC है so इससे resultant field is because they are perpendicular. Twice of this. This will be the result. समझ में आ रहा है डायरेक्शंस देखो डायरेक्शंस क्लियर है ना सबको coil having n turns is wound tightly in the form of spiral with inner and outer radial end. ये कल क्लास में किया था हमने क्वेश्चन और मेरे ख्याल से ये आंसर आया था नॉट डिनाई बाय क्या आंसर था शायद एक क्लास में किया सेम क्वेश्चन स्पाइरल इनर रेडियस या आउटर रेडियस में The ring of radius r is uniformly charged with charge q. If ring is rotated with angular velocity frequency omega, magnetic induction at centers. Now, charged particle in circular motion, we say it's equivalent to current, and current corresponding current is so charged particle अगर angular velocity omega से move करेगा, current is q omega by 2 pi. The magnetic field intensity at the center of circular coil is q naught I by 2 r. I is q omega by 2 pi. So q naught q omega on 2 pi 4 pi r. C part. The charged particle is moving at right angles to uniform magnetic field. It starts moving in a circular arc of radius r. In the field, it now penetrates a layer of lead and loses 3/4 of its kinetic energy. Radius of its path is. चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो रेडियस का फॉर्मूला क्या था r is equals to चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो रेडियस ऑफ पाथ r किसके इक्वल था r is equals to f by हमने इसमें मास को चेंज नहीं किया चार्ज को चेंज नहीं किया मैग्नेटिक फील्ड को चेंज नहीं किया We say when it penetrates a layer of lead, it loses 3/4 of its energy. 3/4 of its kinetic energy it loses. That means it is left with 1/4 kinetic energy. Kinetic energy हमारे पास होती है that E is half m v square. Kinetic energy 1/4 तब होगी अगर velocity half हो जाएगी. As kinetic energy becomes 1/4. Implies because E proportional to E square
अब अगर स्पीड हाफ हो जाएगी तो रेडियस विल बी r/2. Because r is directly proportional to v. So if radius is half, the speed is half, the radius is also half. तो ड्यूट्रॉन क्या होता है? ड्यूट्रॉन का चार्ज ऑन न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन होता है क्या? एक्सप्लोटेरियन न्यूक्लियस. दैट मीन्स उसमें क्या प्रेजेंट है? One proton and one neutron. So charge is 1 e, mass is 2 mu. Charge on neutron is plus 1 e, mass of neutron is 2 mu. Neutron of kinetic energy 50 keV, describing a circular orbit of radius 0.5 meter in a plane perpendicular to magnetic. Kinetic energy of protons that describe a circular orbit of radius 0.5 meter with same way. तो हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की बतानी है अगर रेडियस सेम है. रेडियस का फॉर्मूला हमारे पास है that's momentum upon qb. And momentum is that means you can say E is equals to इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे ऐसे. Energy is half mv square and v is qb r over n. So energy is q square v square r square by depend. हमें दिया मैग्नेटिक फील्ड सेम है, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस भी सेम है 0.5 मीटर. v और r तो सेम है. We can say energy of proton to energy of neutron. Charge of proton square upon mass of proton. Charges भी same है, that means mass पे depend कर रहा है sir. md by mp. Its energy of proton is twice the energy of neutron, so it will be 100. So अगर न्यूट्रॉन की 50 है तो इसकी 100 आ जाएगी. क्लियर है ये? Two electrons move parallel to each other with equal speed. Ratio of magnetic to electric force. इसका फॉर्मूला है such form. Magnetic force वैसे होती है QVT. Electric force is TE. Because अभी आपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा प्रैक्टिकल में बात इसका हमें कंसेप्ट यूज करते हैं. क्लासिकल प्लांट इज अंडरगोइंग हम. अभी इसको आप ऐसा फॉर्मूला याद रखें, इसके डेरिवेशन करेंगे हम 50. And F1 FB is p square by c square. This implies that E is the velocity of electrons, C is velocity of light. This ratio will always be less than 1 or greater than 1. Less than 1. That means FB is always less than F. जो मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स है
It will always be less than the electric force between two electrons. So whatever be the speed, magnetic force can never be greater than the electrical force. A beam of proton enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla with velocity 4 into 10 raised to power 5 meter per second in direction making an angle of 60 degree. मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी में एंगल थीटा whatever be the angle अगर एंगल जीरो हो तो पाथ फॉलोड क्या होता है if velocity and magnetic field are collinear then path followed is straight line and if they are perpendicular path followed is circular collinear और perpendicular को छोड़ के कोई भी एंगल होगा तो path followed will be helical so इस केस में भी helical ही आएगा because it makes an angle of 60 degree because theta is equals to 0 है तो it's theta is equals to 0 और 180 theta is equals to 0 or 180 path followed is straight line theta is equals to 90 it is circular all of the angles it is helical pitch of Alex का फॉर्मूला क्या था BC cos theta into E. cos theta into t is 2 pi m upon qb so पिछले वाले के साथ रिलेटेड है हमें भी है एक फंक्शन पार्टिकल का प्रोटॉन है तो चार्ज और मास पता है एंड वेलोसिटी भी दी है मैग्नेटिक फील्ड में गिवन सारी वैल्यूज गिवन है सिर्फ सब्स्टिट्यूट करनी है Next is an electron moves with the speed of 2 into 10 raised to power 5 along positive x direction. Positive x direction means I cap. In a magnetic field of I plus 4j minus 3 के डेस्क the magnitude of force experienced by electron forces EV cross P psi component is 0 j component10 is for 5 plus ये फोर्स का वेक्टर फॉर्म आ गई अगर मैग्नीट्यूड बताना है तो मैग्नीट्यूड बताना है तो क्या हो जाएगा बिकॉज ये दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी plus 0.6 into 10 raised to the minus 19 over 10 raised to the 5 under root of 8 square plus 6 square.
So 1.6 into 10 is per minus 10. इसमें मैग्नीट्यूड बता रहा है क्लियर है बिकॉज एक वाई डायरेक्शन में मैं फोर्स आ रही है और एक जेड डायरेक्शन में आ रही है तो दोनों पार्टिकुलर है An alpha particle describes a circular path of radius r magnetically p. Radius of circular path described by proton of same energy in same magnetic field. Same कई formula use करो E is equals R is equals to हमें एनर्जी सेम दिया मैग्नेटिक फील्ड सेम दिया so we can say radius is proportional to under root m by 2. Radius of proton to radius of the particle. Direct proportionality to root of mass. And inverse with charge. Mass of proton is m for alpha particle is 4m. Charge on alpha particle is 2e on proton is c. So ratio is 1:1. So अगर alpha particle का radius r है तो proton will also have radius r. Clear है? An experimental diary reads as follows. A charged particle is projected in magnetic field 7i minus 3j and its acceleration is I plus 7j. In coefficient of which we say is question. NCD question है शायद. Something is missing in it. Normally एक वैल्यू मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे x था तो x बता रहा था x I plus 7j. Magnetic field is you have to find the value of x. Concept क्या था इसमें? इसमें concept क्या यूज किया था हमने? Because F is equals to QV cross P. That means force is always perpendicular to magnetic field intensity. Force or magnetic field perpendicular means acceleration and magnetic field are also perpendicular. हमारे पास ये फॉर्मूला था which implies F is perpendicular to B. And A is perpendicular to B. और अगर acceleration और magnetic field perpendicular है, their dot product should be 0. The B dot A should be 0. So 7x minus 21 is equals to 0. So x should be equal to 3. This perpendicular vectors का dot product 0 होता है. HC में ही था ये क्वेश्चन HC के सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही था magnetic field 4 into 10 raised to power minus 3
Tesla exerts a force of 4I plus 3J on a particle having charge 10 raised to the minus 9 coulomb and going in xy plane. The velocity of particles. हमें फोर्स दिए मैग्नेटिक फील्ड दिया चार्ज दिया वेलोसिटी कैसे निकालेंगे we are given that it's moving in xy plane so you can assume that let EV xy plane में तो वेलोसिटी को assume कर लिया vxi plus vy formula is force is in by z direction F is equals to 2v cross v. V is sorry double v. Force differently. Force is given as 4i plus 3. Magnetic field is in z direction. So solve for it. X component of force is 10 raised to the minus 9 pound. J component is minus 75. दोनों साइड को कंपेयर करके आंसर आ रहा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इसको कैंसिल कर दो 10 raised to the minus 1 और फिर दोनों साइड्स को कंपेयर कर दो 3 into 10 raised to the minus 1 is so यहाँ से dx आ जाएगा इधर से dy आ जाएगा particle of charge 10 raised to the minus 12 coulomb moving along its axis with velocity 10 raised to the minus 5, 10 raised to the 5 meter per second experience a force in y direction. Minimum magnetic force. If a particle is moving along x-axis. And it experiences a force in bidirectional. Magnetic field पहले किस डायरेक्शन में होगा बिकॉज यहाँ तो z या माइनस z हो सकता है अगर हम z लेते हैं तो v क्रॉस b comes out to be चार्ज पॉजिटिव दिया अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड को z डायरेक्शन में ले दूं v क्रॉस b is downwards और मेरी फोर्स इज एक्टिंग along y direction it means magnetic field is along negative z direction एक ही ऑप्शन बची है तो नेगेटिव z डायरेक्शन में एक ही दिया
Plus force will be along this formula the passing. Magnitude of check this single and ten raised to the minus 3 Tesla along negative z direction. An electron is accelerated through potential difference V, enters into a uniform magnetic field, experiences a force F. If accelerating potential is 2V, force experienced is. Force experienced का formula होता है 2dV. If it's accelerated through potential difference V, velocity कितनी हो जाएगी? जैसे जितनी potential energy कम हुई उतनी kinetic energy increase करेगी. So speed is under root 2 ev by m. की potential energy का formula क्योंकि जितनी potential energy कम होगी उतनी kinetic बढ़ेगी. ये वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर दो. Now we are given that if its accelerating potential is doubled, पहले v थी अब 2v कर. Accelerating potential double कर दी तो force will also increase root 2 times. Should we do 2f? Because you can simply say that force is directly proportional to velocity and velocity is proportional to under root of v. So अगर potential को double करोगे force increases to 2 times. Imagine that you are seated in a room and there is a uniform magnetic field pointing vertically downwards in it. At center of room, electron is projected horizontally with certain speed. Discuss the speed and path of the electron. Discuss the speed and path of the electron. Speed change करेगी. Magnetic field is pointing vertically downwards. Electron enters करता है इसमें. V cross B की direction. E cross B. E cross B is upwards. Electron है तो force plus electron पे जो force act करेगी that is minus E into V cross B. अब अगर इधर force act करेगी तो it moves in a circle like this. It's clockwise motion. So electron will move along a clockwise path. Because V and V are perpendicular, path followed is circular. Circular में clockwise या anti-clockwise that you can check. So इतने क्वेश्चन करके देखना नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे. इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को क्लास से पहले पूछ लेना अगर इनमें से कुछ समझ नहीं आया तो.